Namaste and welcome to the series India Ke Liye, and I'm in conversation with somebody whose heart beats for Bharat. Always a pleasure speaking with Anupam Kher ji, and his performances continue to mesmerize us. And he's also such a prolific writer. The ability with the pen, each book that he writes is just amazing. Anupam ji, Namaste. I believe you're back in Namaste. Bharat after Yes, spending some time abroad. yes, back and happy to be here. I'm jet lagged, but I have to speak to you because I like you both as a person and as a presenter. So it's a pleasure talking to you always. Thank you, Anupam ji. First up, we are waking up to some very bad news and very sad news. We lost KK, I but know it was very sad because he sang one of the most iconic song of a film that I directed, Om Jai Jagdish, and ironically the words were "जीना क्या जीवन से हार के जो हर पल जी गया something to उसको क्या गम मरने का गम नहीं." It's sad. It's unexpected. That makes you realize that life is so unpredictable. Means to be not there at the age of 51 and perform and go. All this looks okay to say that, oh, he went away while performing. No, this is not the time to go, and this was not the age to go. It's very sad. true, and he's one of the kindest and the nicest people. Wonderful Non-controversial, person. always full of Wonderful. life. Yes, always and simple. Simple. He kept his life very simple. It's so strange to talk about somebody in past tense within the span of 20, 12 hours. Yeah, it's sad. Very No, sad. absolutely. You know, at 53, full of life, full of verve, and there was some magic in his voice. है ना कुछ कुछ लोगों की आवाज होती है जो सीधा रूह तक लग जाती है. उनकी आवाज भी कुछ. Absolutely, absolutely. This is the third voice today. Bappi Lahiri, Lataji, and now KK. It's horrible, horrible. The other aspect, Anupam ji, yes, we've lost KK, and we will remember him through his songs. He उनका गाना जो है पल, which always says कि हम रहे ना रहे कल, पल याद आएंगे ये पल. So that's how I'd like to fondly remember him. My conversation during COVID also was with him, and he was still very positive and full of life at that point in time. The Right. other aspect now is Kashmir Files, the reception that you've got, the love and the accolades that you've got, and how the movie has done. You still surprised, shocked that the kind of I attention the movie's I'm got. somewhere thankful to the audiences for accepting in the sense for bringing forth the pain of the Kashmiri Hindus, which was not only hidden for 32 years, but which was also denied to them for 32 years. The large acceptance of the audience all over the world is the it makes me feel that the healing of some kind has started. At least they were कश्मीरी हिंदूज वर ऑलवेज टोल्ड दैट ऐसा कहाँ हुआ था या कितने लोग मरे थे कितने क्या थे वो बड़ा एक अंडर द कार्पेट उसको पुश करने की कोशिश की थी तो the largeness and the humongous box office collections in terms of is much more than the money collected because now wherever I go, and it's not only the Kashmiris who are reacting to it, it is Indians who love their country are reacting to it. It's also out of sense of guilt that they did not know that this was happening in their country. They did not know. It's a fearful, frightening thought for them. And बूढ़े बुजुर्ग छोटे बड़े जिस श्रद्धा से मिलते हैं जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो मुझे मिलते हैं it's very gratifying. It makes me also teary eyed because they identified with the pain finally with the pain and the longing of the Kashmiri Pandits which they were made to sort of forget or they were denied. So that's fantastic. That's very good. And also, we need to come up with stories like this. We need to come up without feeling apologetic about it. Because the world tries to make you feel apologetic. World tries to make you feel defensive about it. Whenever there is something like this has happened, they will go about trying to create a scenario around it so that they will sort of make it, they will take away the dignity out of it. They still are there. But the large acceptance of it from all walks of life. I was in LA
and I met so many people. I went to Bombay, Dubai, US. The flights में जो लोग मिले, आज भी सुबह मैं कहीं पर था जो मेरे को, I was just trying to buy a new car, that the person who was showing me the car, he said, सर आपको सल्यूट करना चाहता हूँ कि आपने ये फिल्म बनाने का गट्स दिखाए. I don't know why people use the guts दिखाना. Guts क्या है? ये तो सच है. Cinema is a great medium to sort of show the truth. It has done all over the world. Nobody, I think, asked people when they saw Schindler's List. There are so many films on Holocaust. Nobody sort of said guts दिखाना है. हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों. I mean, he was saying it admiringly. He was saying it giving me a morale booster. But so it's fantastic. So I went to a temple in LA. इस बालाजी का टेम्पल है. वहां पर एक 70-75 साल की महिला लाइन में खड़ी थी जो प्रार्थना के लिए. वो मुझे आज मिली और इतना झुक गई कि आई कैन नॉट बिलीव इट. शी सेड थैंक यू, आपने ये फिल्म बनाई, थैंक यू. सो आई थिंक देयर इज समथिंग नाइस व्हिच हैज कम आउट ऑफ इट. ये दो पैरेलल पैरामीटर्स हैं. एक ग्रुप जो कहता है कि आपने हिम्मत की, गट्स दिखाया पिक्चर बनाने. दूसरा कहता है कि आपने हिमाकत कैसे की, हाउ डेयर यू. और ये हाउ डेयर यू वाले हैं जो कि आपको हर जगह ब्लॉक कर रहे हैं. अब आप देख रहे हैं कि विवेक के साथ क्या हो रहा है. अच्छे के साथ बुरा होता ही होता है. यू नो, जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, वरना अच्छे लोगों की अहमियत कहां से आएगी. हर जगह विलन रहे हैं, हमारे एपिक्स में रहे हैं, हमारे लिटरेचर में रहे हैं. विलन का होना जरूरी है, तभी हीरो जो है उसकी महानता का, उसके इम्पोर्टेंस का एहसास होगा. तो ये सब लोग जो हैं ये अपने आप से दुखी हैं, हमसे दुखी नहीं है. ये अपने आप से दुखी हैं. कैन यू इमेजिन कि इनको एक झूठ पर जीना पड़ रहा है. मैं हमेशा सोचता हूँ ये घर में क्या बोलते होंगे. ये जो टीवी डिबेट्स पर इस पिक्चर को या इस फिल्म को डिनाई करते हैं, या कश्मीरी जेनोसाइड, कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को डिनाई करते हैं, उनके घर वाले होंगे, उनकी बीवी बच्चे होंगे, उनके हस्बैंड होंगे, उनके ये सब होंगे. तो घर पे तो ये, इसका मतलब वो झूठ जीते हैं. तो ये वो उस तरह के लोग हैं. तो मैंने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया है. पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे दया आती है, बिकॉज ये बेचारे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक इसके 2-3 लेयर्स हैं. आप इसको ज्यादा समझते हैं. वन इज देयर वाज अ सिविलाइजेशनल स्ट्रगल कि कश्मीर which was the cradle of Bharatiya or Bharat civilization from 12th century onwards, it's the 7th 8th exodus that we have seen. So cleansing was one aspect. The Islamist agenda, political ideology, theologically driven, that's the other agenda. There's a third one which says that if you believe in a Bharat under the leadership of Prime Minister Modi, if you are a supporter of Prime Minister Modi, I will cancel you out. ये 3 forces हैं. अब जैसे ऑक्सफोर्ड में जो हुआ है, that has happened because Vivek Agnihotri has somebody who's a Modi supporter, or he's proud of the Bharat that we are seeing today in 8 years of Prime Minister Modi. He's somebody who's come out and called out. It is not being about a Modi supporter. It's being supporting the Prime Minister of the country. Yeah. Modi is the name. Narendra Modi is the name of the Prime Minister of the country, who has been elected democratically by a huge amount of success and by a huge amount of voters. So to isolate him, those people are ostriches. They are trying to say Modi supporter. No, they are Prime Minister supporter, and it's so wonderful to be the supporter to supporting your Prime Minister. How many countries in the world support their national leader, whether it's a president of so and so place, or with the Prime Minister or the ruler of the, with so much of joy and happiness. It's a great feeling, and that can only happen when the Prime Minister is doing some amazing, remarkable work. कोई कुछ लोगों के रिश्तेदार तो है नहीं मोदी जी, या कुछ तो खास पता नहीं. पहले इन्होंने बहुत बोलना. जब मैंने बोला कि आई एम एन एडमायरर ऑफ मिस्टर मोदी, तो पहले उन्होंने बड़ा बोला राज्यसभा की टिकट चाहिए, राज्यसभा की. अब 7 साल हो गए राज्यसभा की, 8 साल हो गए, मुझे राज्यसभा की टिकट नहीं चाहिए. फिर इन्होंने ये भी बोला कि जी बीवी बीजेपी की है, बीवी वगैरह. तो ये डिफेंसिव करते रहते हैं. बट सो लेट्स नॉट से दैट so and so is a Modi supporter, so and so is a country supporter. They confuse the issues. If I support my Prime Minister who is worthy of it, then I am supporting my country. You understand?
It is Yeah. so that divide has been made by them, those so-called people. The divide उनको सूट करता है. उनको एक सूट करता था कि एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल जो कुछ नहीं बोलता था. With all my due respect to Prime Minister Manmohan Singh ji for the kind of work that he done, and as an individual, I have great respect for him. But he was also controlled by the by the Mrs. Gandhi and other people. He was also so many things he said which were controversial, but it suited the thing to everybody because it was uh, it was a kind of a scenario where said चल अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे. अब वैसा है नहीं. अब देश की बात हो रही है. अब देश विकास पे जा रहा है. हजारों चीजें उनको भी डिनाई करते जा रहे हैं. तो ये हिंदी फिल्म में पुरानी जो हिंदी फिल्में होती थी वो 16 रील्स की होती थी. तो 14वीं 14th रील के आसपास विलन जो था वो बौखला जाता था. फिर वो अजीब और गरीब हरकतें करता था. तो ये उनका सिचुएशन वैसा है. तो ये और 7-8 साल 20-15 साल निकल जाएंगे जब मिस्टर मोदी होंगे या जब उसके बाद जो कोई भी होंगे. देन दे विल गेट टायर्ड because they have tried to sort of project the other gentleman to be the next prime minister. They've tried to reinvent him always. Every single magazine sometimes say that now the man has risen to the thing. Now the man is going to do something. The man only takes pauses of 2 minutes in an answer with question that is asked to him. और कोई alternate नहीं है. I wish there was an alternate to somebody. I wish they were very strong opposition leaders. They are unfortunately dwarfed in front of Mr. Narendra Modi because of his deeds, because of his work. First of all, you know that he does not want anything for himself. That is so clear. चलो वो आपको पसंद नहीं करता है, वो एरोगेंट है या आपको घास नहीं डालते हैं, वो चीजें आप बर्दाश्त कर सकते हैं. मगर he is uncorruptible, that the world knows. And this also they know that he only talks about India. You have never seen him कि आज प्रधानमंत्री छुट्टी पे जा रहे हैं और उसके ऑफिस में जो सिनेरियो में है वो हर दूसरे दिन छुट्टी पे चले जाते हैं. तो हम I'm not trying to make fun of anybody. I am just saying that what is the alternate? We have run a country where I am saying that there was some very admirable qualities about Mrs. Gandhi. Great admirable, except for the emergency and few things that. But still, I will say I had great respect for her. I had great respect for Lal Bahadur Shastri. When I was very small, I remember that when Pandit Nehru died, I cried because I was in 5th standard or something like that because Dadaji chale gaye. But uske baad we made a prime minister who was a Indian Airlines pilot who had no background of politics just because he was the son. Then unfortunately he passed away or he was part of an assassination of the terrorism. Then his wife became the president of that party. And then I was reading somewhere that उसके बाद फिर दूसरे ऑटोमेटिकली बन गए राहुल. तो इतने बड़े देश में कोई ऐसा नेता मिला नहीं. But when the Prime Minister Modi came, I'm not being defensive about somebody. I'm not defending. He doesn't need defending at all. He's too strong to defend himself, and he has a lot of people around him who can defend him. I'm just talking about the truth. Yeah. What are you trying to say? अब विवेक अग्निहोत्री जी ने फिल्म बनाई कश्मीर फाइल्स. बड़ी कोशिश की नेताओं ने, चीफ मिनिस्टर्स ने उसको डिमीन करने, हमारी फिल्म को डिमीन करने. And including some very पढ़े लिखे MPs who were with the United Nations, जिनको वर्ल्ड के बारे में बातचीत करते हैं, उन्होंने भी बोला कि अरे फलाने देश ने ये पिक्चर को बैन कर दिया है, देखा. मुझे हंसी आती है कि आपको एक पार्टी लाइन को शो करने के लिए इतना झूठ बोलना पड़ रहा है कि आप अपने लोगों के जेनोसाइड को कर रहे हो. So I think it's a very easy choice for people like so many millions of people. There are more than 300 seats of this government. It's not a coalition government or something like that.
It's not, which he's a no nonsense prime minister, and I like it. Like I'm a drama school student. मेरे Yeah. ड्रामा मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब थे। इब्राहिम अलकाजी साहब टेरर थे, मतलब हम सब उनसे डरते थे। उनकी गाड़ी के हॉन्क से समझ जाते थे कि सर जी का मूड आज कैसा है। But whatever I have learned and millions of other students have learned is thanks to him. So whatever the country is going through in every sphere, in every field, is thanks to the policies, thanks to the, forget about the policies, thanks to the intentions of the people. Yeah. It's the intention of the, you can't question the intention of the prime minister. Correct. But इसमें क्या है? What happens is now 370 abrogation happened. There is again a certain level of resettlement or reallocation of posts, and then a certain level of equanimity that is trying to be brought in Jammu and Kashmir. What is happening is that there are these cowards, these rats who are coming out of their homes and then targeting vulnerable innocents. Rajni Balaji, a teacher, was shot Absolutely. dead. This is a repeat that's happening. Isn't it frustrating that there are those who will continue to give cover fire to these cowards, to these people? They will continue to call them militants and not terrorists. They will continue to say Sarkar kya kar rahi hai, rather than going out and saying that we reject this kind of terrorism and this kind of activities here. ये क्या सालों की जंग लगी हुई है इन लोगों के जहन में और इन लोगों के दिमाग में, सालों का। इसको बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर I was reading yesterday somewhere that the influx of tourists in Kashmir is this time record breaking. Yeah, 80 लाख से ज्यादा हो गए हैं ऑलरेडी। मतलब ये अनबिलीवेबल है। तो ये वहां के लोगों के लिए अच्छा है, जो वहां बेचारे जो काम कर रहे थे, जिनको जरूरत थी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, उनके लिए अच्छा था, इकोनॉमी के लिए अच्छा था। इकोनॉमी की किस, सिर्फ कश्मीरी पंडितों नहीं, बेचारी रजनी पालक 10 किलोमीटर जो रोज जाती थी पढ़ाने बच्चों को। किनके बच्चों को? डोगरा थी वो। हाँ। प्रॉब्लम इज दैट दे हैव मेड इट इनटू not against terrorism versus innocent people. They are trying to make it one community against another community. टेररिज्म से तो सबसे ज्यादा नुकसान बेचारे हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का भी हुआ है। जो हिंदुस्तान के बारे में बोलता है वहां पर उसको मार देते हैं। ऑफ कोर्स कश्मीरी पंडितों को मारा, एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सॉर्ट ऑफ सी दैट। तो अच्छी चीज को जब देखते हैं वो लोग जिनको अच्छा पसंद नहीं है या जिनके खुद को ऐशो आराम जा रहा है, वो उसको क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं। अब यासीन मलिक को देखिए, इतने सालों बाद फाइनल हुई है एक केस। आपने उनकी तस्वीरें किसके साथ देखी? अनफॉर्चुनेटली विद द प्राइम मिनिस्टर। आपने उनकी तस्वीरें, ये जो न्यूज चैनल्स के वो जो करते हैं आप साल में एक बार या 2 साल, तो उसमें उनको प्लेटफॉर्म दिया था, यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। तो कोई ये जंग था, एक किस्म का पोल्यूटेड माइंड था। अब मेरे को बार बार बोलते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए अनुपम खेर। अरे मैं तो कश्मीरी पंडितों के लिए पिछले 30 साल से बोलता चला आ रहा हूँ, तो मुझे मत सिखाएं, मुझे ना सिखाएं ये कि मुझे कश्मीरी पंडितों के लिए क्या। बट उनका वो नए वो बैठ के नए चीजें निकालते हैं ना। जैसे मैं पढ़ाई में बड़ा कमजोर था, तो मैं साल के एंड में गेस्ट पेपर लेके आता था, वो जो रैपिड गेस्ट पेपर होते थे वो पढ़ता था। तो उसके बियॉन्ड अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे समझ में नहीं आता था। ये वैसे ही हैं, ये गेस्ट पेपर करने वाले हैं, तो इनको लगता है कि अभी मैं कुछ और ऐसा बोलूं कि जिससे, बट थके हुए, हारे हुए, बुझे हुए किस्म के लोग हैं, और ये कायर हैं। कायर इंसान ने अच्छे लोगों को मानता है। इनमें से कोई भी अगर ये सेना के, मैं तो हमेशा आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स फॉर द फौज। आप फौज पे खड़े आदमी को जो सरहद पे खड़ा होता अकेला, उसका करेज देखिए आप। इनकी क्या हेल्प की है, क्या क्या हेल्प करी है। आई हैव डन अ प्रोजेक्ट about a girl who had no limbs in Kashmir, and we have sponsored her. We've got her. It's a great thing we have done. There are other organizations which has joined us. उनके हमने लिंक करवाए हैं, वो फौज ने हमको इनिशिएट किया था। तो जो सच बोलना जानता है उसको सब पता है। आप इस इंटरव्यू में आनंद, बजाय
हिंदुस्तान की अच्छी के बारे में बात करने के लिए, अच्छाई के बारे में, हिंदुस्तान ने क्या प्रोग्रेस किया है, हमारा कितना मान सम्मान वर्ल्ड में हो रहा है, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जी। वर्क नहीं है ना आपकी जिंदगी ना मेरी जिंदगी में। देख, लेकिन ये लोग हैं जो कि भारत की स्टोरी को डिरेल करने के लिए नहीं, अरे बहुत कोशिश भारत कर की रहे स्टोरी को कोई डिरेल नहीं कर सकता। भारत बहुत महान देश है मेरे दोस्त। भारत की हैं। परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। हमको 8 साल का मुगल का रूल और 200 साल का ब्रिटिश रूल नहीं हमको बर्बाद कर सका। कितने अभी ये तो सभ्यता है। आप कैरेक्टर को थोड़ा कर सकते। जो आदमी अच्छा है वो अच्छा है, जो देश अच्छा है हमारी ये हमारे में सबसे ज्यादा सहन शक्ति है। सबसे बड़ा हमारा इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमने हजारों सालों में किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। जी। तो भारत देश की तुलना या भारत देश को फ्रेजाइल समझना बिल्कुल आपकी भी बेवकूफी है, मेरी भी बेवकूफी है। जी। और आपकी ताकत और मेरी ताकत जो है वो ये है कि हम भारत को बहुत बड़ा महान समझते हैं। दैट गिव्स मी पावर एंड आई एम श्योर दैट गिव्स यू पावर। एब्सोल्युटली, क्योंकि भारतीयता जो है वो एक द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। पुरानी सभ्यताओं में से भारत जो है अभी भी है। बट कई बार अनुपम जी ऐसा होता है कि व्हेन वी स्पीक एंड व्हेन वी लुक एट 2 out of 3 Indians trusting the leadership of Prime Minister Narendra Modi. India or the Indian government and its administrative systems, Ipsos survey saying that it's among the top 2 nations across the world. India and Malaysia are the most trusted as far as the trustworthiness. There are so many positives. We've got record amount of exports that have happened. Our GDP, we are pegged as the fastest growing economy in the world. Despite all other stock markets crumbling, our stock markets haven't crumbled. Even अरे the हम relative inflation कोविड is में lower. 2 वैक्सीन बनाए यार, हमारे दो देश में वैक्सीन बनाई। बनाए कोविड में। 1 बिलियन लोगों को हमने वैक्सीन लगाया है। यू अंडरस्टैंड। Yeah. और Yes. हमारे अंदर छुपे हुए कुछ इडियट किस्म के लोग हैं जो जिनको सूट करता है कि देश की बुराई करना, पर जो अपने देश का नहीं हुआ वो अपने घर वालों का कैसे हो सकता है। सिंपल सी बात है। Yeah, true. But चलिए इस पर बात करते हैं. Like final 2 questions. One is that this is a digital exclusive, so this is to an audience which generally does not watch too much of news on TV. But this is an audience that engages a lot with you. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हमारा 75वां साल है आजादी का. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अगले 25 साल हमको डिसाइड करना है कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं व्हेन इंडिया टर्न्स 100 years old. तो आपके लिए भारत के क्या मायने हैं? And what is it that this generation and the coming generation can do for their country? किसी उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आई वेंट फॉर ए मोटिवेशनल लेक्चर एट UCLA इन LA. अब मैं तो मेरी जिंदगी में कभी 38% से मार्क्स ज्यादा आए नहीं है। अब पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं खेल कूदे भी नहीं अच्छा था, मगर मेरे को भारत ने क्या दिया, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क को UCLA दे दिया उनको मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आते हैं। और उस लेक्चर में एंड में भारत माता की जय के नारे लगाए उन्होंने। ये मुझे एज एन इंडिविजुअल भारत ने दिया है। एक छोटे से शहर में छोटे से this is what the Prime Minister has done. He has made every Indian aspirational. Look at the sports thing. Look at every Yeah. person who is winning medals etc etc. तो भारत ने तो हमको बहुत दिया। मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ, मैं बाहर पहले जब हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाता था, औकात नहीं थी, अब मैं जाता हूँ तो आई ऑलवेज से टू गॉड आई एम सो थैंकफुल आई एम बोर्न इन इंडिया। देयर इज समथिंग सो प्योर अबाउट, देयर इज समथिंग सो अमेजिंग अबाउट इट। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं हिंदी मीडियम स्कूल में मेरे को अंग्रेजी में मैं सोचता नहीं हूँ, बट आप यकीन नहीं करेंगे एंड दिस इज आई एम नॉट सेइंग इट फॉर फैक्ट कि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स पीपल या बाकी लोग जब बाहर के देश में कंपटीशन में जाते हैं, चाहे ओलंपिक्स में जाते हैं या किसी मैराथन में जाते हैं या बैडमिंटन के उस लिए या किसी के लिए, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टर अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है बिकॉज एक्टर एक्टिंग करने का है। पर मैं हर शॉट से पहले अंग्रेजी में मुझे लगता है कि जो शॉट दे रहा हूँ इतने लोगों के साथ, आई शुड बी द बेस्ट बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। और मैं आंख बंद करके अंग्रेजी में सोचता हुआ भारत माता की जय, and then I give a shot. My shots are dedicated, that focuses me. So I'm giving you practical examples.
My country has given me focus. My country has given me. I'm in my acting school right now. मेरे पीछे किताबें लगी हुई हैं. अगर आपको मैं चारों तरफ दिखाऊं, यहाँ पर पद्मश्री है, पद्मभूषण है, ये 525 फिल्में कर चुका हूँ. ये मुझे भारत ने दिया, तो मैं ऋणी हूँ भारत का. एंड येट आई थिंक ऑफ टुडे एज ए न्यू कमर. जी मेरे से भारत 8 साल बड़ा है, तो हम तो दोनों छोटे भाई, बड़े भाई या छोटी माँ, बड़ी हम बड़े हुए हैं. तो भारत को अगले 25 साल में मैं राष्ट्र हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर समझता हूँ. बिकॉज आवर यूथ may come across experimental sometimes, but they are a very honest generation. They think about India in a very subtle manner. Not that they वो मेरी तरह भारत माता की जय या झंडे ले, मैं वो मेरी जनरेशन, बिकॉज मेरे जनरेशन में इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस के लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी. ये आज भारत में पैदा हुए हैं आज. जी हमारा फ्यूचर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो जनरेशन, ये बड़ी honest generation है. जी और क्या मन में के देश के प्रति बहुत कमाल का वो है. मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने यूसीएलए के लेक्चर को स्टार्ट किया. यहाँ पर जितनी भी जो मेन कंपनी, चाहे वो ले लीजिए, चाहे गूगल ले लीजिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, सबके सीईओ हिंदुस्तानी. जी वो तो सही. वी हैव ए ग्रेट फ्यूचर. एंड ये इधर उधर के छोटे मोटे टुच्चे लोग जो हैं, ये हमारे देश का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं. तो पैसे एजेंडा. चलिए, तो आखिरी प्रश्न अनुपम खेर के लिए, अब अगला क्या? What next for Anupam Kher? I am starting a new film on the 4th, which is very exciting. I am waiting for Suraj Barjatia's film Unchai with Mr. Bachchan and Bama Irani and other people, which is going to be a fantastic film. And I'm there to do so many things. My foundation is work. In the sense, when I say great work, not necessarily in volume, but our intentions are to do great work. Representing my country all over the world. Absolutely. So such a pleasure to speak with you, Anupam ji. I tell you, every time I speak with you, there is some special urja that I get, where you just want to do more and just want You to bring out the achieve more. best in me, and you bring out the Indian in me. Thank you. I think I am successful if that happens with all of us, and we are each able to bring out the Indian and the best out of each other. Thank you so much, Anupam हाँ, ji. एक शक्ति है हम लोग, जी और ऐसी बिल्कुल शक्ति कौन हरा सकता है? भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. थैंक यू सो मच अनुपम जी. ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद.